हिमाचल जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि क्या हो गया कि when I used to go to eat or to stay, everyone used to be like, "You're alone? You're traveling solo? अकेले आए हो आप यहाँ पे?" तो I used to lie. I used to be like, "No, no, no. I have friends with me, whatever." Then I started realizing that people are not used to seeing solo female travelers much. When I started traveling solo, like a decade ago, right? I was 20-year-old. I have revealed my age somehow, but तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इतना लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, सोलो फीमेल ट्रैवलर इतनी नहीं है। फिर उसके बाद मेघालय जब मैं गई तो वहाँ पे ऐसी रैंडम एक चेरापूंजी में एक विलेज है नोंगरियात करके, तो वहाँ पे जो डबल रूट ब्रिज का ट्रैक होता है वो किया मैंने। उसके बाद ना सम ट्रैवलर्स गो अहेड, वहाँ पे रेनबो वाटरफॉल्स का ट्रैक होता है। सो आई वेंट देयर, जनरली आई वाज स्विमिंग, ये वो, मैंने किसी को ऐसे बोला एक रैंडम गाइड को कि बाबा कैन यू टेक अ पिक्चर ऑफ मी। He's like, okay, he took a picture and I posted after I got back. ऐसे 2-3 हफ्ते बाद I posted. फिर उसके बाद little did I know, it went viral on Instagram and I used to post random things. Okay, 3,000 followers थे मेरे. Randomly I used to post travel pictures. कोई मेरा intention नहीं था कि social media and all that. तभी के time पे इतना कुछ था भी नहीं. तो I posted that and it got viral. Every travel featuring page में मेरा picture था. Overnight I got like 7,000 followers, then 48 hours के बाद I was at 17,000 followers and I'm like, how is this possible, like what is happening? I was feeling really overwhelmed, right? Brands started reaching out, they were like, oh, we want to work with you, we would like to send you this, आप काम करो ये वो करके। That time of course इतना कुछ budget नहीं था उनका, but it was like a new, alternate career opportunity. My friends started talking about it. My friends were like, why don't you give this a shot, because you're good at it, you're anyway traveling, so post content around it. So that's how I realized if you do what you really love and if you try and post about it, or if you are talking about it, people would really like to listen, or people would really like to pursue that, because it's quite motivating कि आप anyway आपको traveling पसंद है और उसके around ही आप content create कर रहे हो. So this is how it all started, right? But मैंने अपना job नहीं छोड़ा था तभी. I still was building my profile. धीरे धीरे it started building up. I reached around 30K. Then one day I thought कि अगर मैं जॉब करती रहूँगी तो मैं इसको फुल टाइम नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल दे आर डूइंग फुल टाइम जॉब एंड कंटेंट क्रिएशन. फॉर मी इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, बिकॉज तभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं होता था, तो मुझे फुल टाइम ऑफिस जाना था. अभी इट्स वर्क फ्रॉम होम, सो इट्स ईजियर फॉर पीपल. तो मैंने फिर सोचा कि यार आई हैव टू लीव एंड आई क्विट वन डे. बट लकीली माई फर्म वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर दैम रिमोटली. तो 2 साल तक मैंने वो किया, तब तक और इंस्टाग्राम बिल्ड किया एंड आई रीच्ड अराउंड 60K. ऐसे थोड़ा इनकम आना चालू हो गया था एंड देन आई रियलाइज्ड कि लेट्स जस्ट गिव अप दिस जॉब एज वेल. इतना भी टाइम नहीं देना चाहिए, सब पूरा टाइम मेरा कंटेंट क्रिएशन पे जाना चाहिए, मेन फोकस वहाँ रख देते हैं. तो नाउ आई विल टॉक अबाउट द हार्डशिप्स about switching the career altogether when you have like a stable job, also when you have a good stable job, right? CS, lawyer, सब कुछ करने के बाद by the way, हाँ, while I was working I was pursuing law. तो फिर CS law का काफ़ी कुछ everything was going well. It was nothing like I was hating my job or I'm like really stuck at it. तो काफ़ी कुछ अच्छा इनकम था, but then while I was switching my career I just saw the reality कि इतना earnings नहीं होता, थोड़े hardships होते हैं. And how I tackled it is by following the 1:5 rule. If you are a traveler, you would know about it. कि 1:5 rule is nothing but your passport to have like a well-traveled life. It is कि आप एक चीज़ जो आपको एक ट्रिप करना है, that valuable trip of yours, if you want to do that, you have to give up 5 materialistic things in your life. जैसे कि expensive dinners हो गए, expensive clothes हो गए, आप जो भी जहाँ पे भी spend करते हो, just spend less on that or don't spend at all, and then you'll be able to do that one dream trip of yours. And ऐसे धीरे धीरे budget travel करके I started growing my page as well.
सोलो ट्रैवलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. Why I chose solo traveling? Because not everyone shares the same zeal towards travel as you. I realize that. सबको इतना ट्रैवलिंग पसंद नहीं आता है. लोग बोलते हैं हमें ट्रैवल करना है, बट जब जाते हैं then they realize कि no, this is not for me. Oh my god, I can't travel like this. What is this? Why are you staying here? What are you eating? ऐसे कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं, कहीं पे भी थोड़ी रह सकते हैं. So you have to be like a real traveler to really enjoy traveling. If you're a luxurious traveler, तो थोड़ा difficult हो सकता है आपके लिए to start. तो परमिशंस लेना, फिर उसके बाद सारा कुछ उनका एक ऐसा होता था कि 3 दिन ही हम आ सकते हैं. एंड आई वॉन्टेड टू ट्रैवल स्लो, सो एनी वे दे वुड गो बिफोर मी ड्यूरिंग अ ट्रिप, एंड देन आई यूज टू फील बैड. ओके, दे हैव लेफ्ट, नाउ आई एम लेफ्ट बिहाइंड. तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो, एंड फिर मुझे आदत पड़ गई. फिर एक बार जब आपको सोलो ट्रैवलिंग की आदत पड़ जाती है, व्हेन यू बिकम सो इंडिपेंडेंट एंड so much, you are exploring by yourself, you learn so much about yourself, you learn so much about the cultures, you learn so much how much can you take, so many hardships you go through. There has been incidences जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है. तो जैसे मेघालय की बात है, नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं फॉरेस्ट के अंदर जाके अकेले रात को कॉल उठाती थी ऑफिस का या मीटिंग्स लेती थी, और अकेले. तो इट वॉज़ अ लिटिल स्कैरी. देन जैसे थाईलैंड में आई वॉज अलोन, आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो. तो कोई फॉलो कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दैट टाइम यू फील कि ओ माई गॉड, आई विश देयर वॉज समवन विथ मी. So yeah, these all challenges I faced. Also, like family support, my grandma really used to cry a lot, used to be like, oh my god, how can you leave such a career? It's not like an ordinary career, you're leaving such a big thing. तो उनको भी समझाना पड़ा. लिटरली वी हैड दिस टॉक. आई वाज लाइक कि अब आप डिसाइड करो, आपको मुझे रखना है कि घर से निकालना है. तो दे वर लाइक ओके, घर से तो नहीं निकाल रहे, बट प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट डू इट, बट वी कांट सपोर्ट इट. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे डिडंट सपोर्ट, बट धीरे आई ट्राइड शोइंग देम माई वर्क, एवरीथिंग लाइक दैट, एंड दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट. नाउ दे आर रियली हैप्पी वेयर आई एम. तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना. आप समझा लो, थोड़ा मना लो फैमिली को. जस्ट बी अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज you should do what you love. One life you have got. दूसरों के लिए नहीं जीना है. That's what I learned and I pursued. तो अब मैं I'll talk about the plan. Okay, I will talk about the plan as in to guide you guys कि कैसे आगे जा सकते हैं इसमें, if you are planning to build a career around social media. Just choose your niche, ये तो सबने बताया होगा. Do not copy from others, do not copy someone else's content. या ऐसे आप सोच रहे हो कि यार ट्रैवलर बन जाते हैं, let's become a travel content creator, and you're just becoming that. ऐसे नहीं होता. You have to be a traveler first. It kills me when I see some content creators, travel content creators, create just content, just go to a location because they want it for Instagram, they want it for YouTube, and not because it makes them happy. It kills a traveler in me, right? Because मैं traveler बहुत पहले से थी, फिर content creation इसमें आया. It should always be that, your motto should be that, to be a content creator when you are actually good at something and you just want to explore more, right? You just want to explore your whatever passion you have. तो कुछ भी art आपका, कोई भी art, सब में एक unique quality होती है. Just find your art and just start posting about it, कोई रील ज़्यादा, अब तो रील्स आ गए हैं, तो कोई रील ज़्यादा रीच नहीं जा रहा है, कोई जाएगा ओवरनाइट भी वायरल हो सकता है. Doesn't matter. Start posting. You are going to go through a lot. You are going to get mocked. Mockery बहुत होती है, like your friends, your family, your acquaintances, they are gonna tell you कि oh my god, देखो influencer आ गई, अब तो ये record करेगी, अब तो ये करेगी, वो करेगी. Don't listen to them. You are seriously gonna live a happier life. Okay, I am just gonna say that. And let's talk about the current situation where I am. So I am reaching 140K almost. Abhi. Thank you. So I'm reaching 140K almost, and इसलिए मैंने, of course, I am doing quite well on Instagram, and I would really like to help you guys. If you want to become a travel content creator or any kind of content creator, I would just say
कि just follow your heart, of course. Do what you love. Life is too short to do what you don't love. Sorry. Yes. I got confused. ठीक है. तो मतलब whatever. Do your thing. Be your unique self. And because of that, to help fellow solo travelers, I started a company called Nakshe. It's a travel company, and I am a proud owner of it. क्यों मैंने ये start किया? Because what hardships I went through for female solo traveler, as a female solo traveler, I didn't want other girls to go through that. And एक community बनाई है जहाँ पे सारे solo travelers unite होके they'll be able to gel up, have fun. My own itinerary, wherever I have been, I want my followers to be there to experience those kind of things, and that's why I created Nakshe. And we have successfully completed 7 trips till now. It's just been thank you. It's just been like 7 months of starting it और 7 trips complete हो चुके हैं. International भी करना है. I want to do an all girls trip as well. और ज़्यादातर 90% of the crowd solo travelers ही आते हैं, so that makes me really proud. And 9 to 5 आप करते हो, job करते हो, you don't have time to curate an itinerary, you don't have time to you don't have time to get your friends on board. तो मतलब सब आ जाते हैं, chill करते हैं. अभी literally I'm coming from Gokarna. My last group trip happened there, and people do sign up, and I'm really happy. You just have to have fun with it. I think people relate to me just because I'm literally like this online and offline, raw and authentic. कभी किसी को copy नहीं करा, कभी इतना सोचा नहीं. If I'm posting something, I'm just posting about it. People like me because whoever I am, right? तो ये सब होता है. And yeah, that was it. I would just say कि whatever I said, कि if you want to pursue this, please, 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 if you choose traveling as your career, travel content creator, तो just a request, be a traveler first. If you enjoy traveling, क्योंकि आप 1-2 trips करोगे तब आपको समझ में आया कि are you really enjoying this? Are you really liking this? And if you enjoy this, then you can create content. क्योंकि otherwise it will be a little exhausting, and it won't be anything better than a job. It will be something which you are not liking, but you are still doing क्योंकि पैसे कमाने हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना. And lastly, I would just say, remember these lyrics जो मेरा favorite है. You gotta make your own kind of music and sing your own special song. Be uniquely you. Thank you.